بقول له بس دخلني حالي بدي 6 دقايق مش قادر يدخلني. ليه؟ بقول لي لا روح من غير فيش تدخل، مع اني ست كبيره في ال70، شو بدي اعمل اسوي انا؟ بدك تروحي؟ بدي اصلي بس. יש, אסור ללכת לצבא גם אם הוא כן לומד או לא לומד. אפילו אם זה נחל חרדי, כאילו מיועד לחרדים. It's a whole different army. When you come in Orthodox, it's with a different head, coming to serve God. 20% of young men lose their religious identity while in the army. That's not a percentage which the Haredi world would be willing to tolerate. We're in Jerusalem, and recently these streets have been the scene of violent protests and riots, but there hasn't been a Palestinian in sight. Instead, it's the Orthodox Jewish community who are furious with the army for trying to send their sons to war. In March of 2014, the Israeli government passed a law requiring the ultra-Orthodox, a community of mostly religious and conservative Jews known as the Haredim, to serve in the Israel Defense Forces. Previously, Haredi boys who studied in religious seminaries or yeshivas were exempt from Israel's universal conscription law, which requires all citizens from the age of 18 to serve in the army for 2 to 3 years. The decision drew fierce opposition from the ultra-Orthodox community, its leaders ordering that no one should comply. I guarantee you it's not going to happen. No yeshiva student will serve in the army by coercion. He'll leave the country, he'll go into hiding, he'll go into the underground, or he'll go into jail. We saw this sentiment echoed throughout the Haredi neighborhoods as anti-IDF posters were put up. The poster is showing how the Israeli government is forcing the religious Jews to go to the army, but the army's values are not that of the yeshivot. There are many things in the army that go on that are, for a religious Jew, not permitted. And that's what you're seeing in this picture, that the religious Jew feels like he's being pulled into the garbage, being what goes on in the army is like garbage to us. The ultra-Orthodox have always sheltered themselves from the influence of the secular world, including the military. This goes back to the very beginning of the State of Israel, when David Ben-Gurion struck a deal with the Haredi community, allowing yeshiva students to forego military service as long as they remained in the yeshivas, protecting and preserving the Jewish religion. The exemption has never been popular with the secular community, and through the years, there have been attempts to try and find a compromise, including a deal struck with the IDF and a group of Haredi rabbis that created the Netzah Yehuda, an ultra-Orthodox battalion made up of volunteer soldiers. But as the Haredi population grows at an exponential rate, what started as a privilege granted to less than 400 Haredi boys has become a loophole for nearly 60,000. The Haredi community's weak presence in the army and in the workforce has prompted criticism from mainstream Israelis, who see the community as a financial burden to the country as a whole. Vice News went to Mea Sharim, one of the oldest Haredi neighborhoods in Jerusalem, and the site of many anti-military protests. We ran into trouble almost immediately. The Haredim are notoriously cloistered and try to isolate themselves from outside influences. Our being in the neighborhood was no exception to this rule. We jumped out of our car and a guy stopped, stared at us, started twirling his beard, and has now been following us down the road for the last 10 minutes or so. We pulled out the camera and he just launched himself at the cameraman. It's clearly a sensitive community. We managed to make our way to meet Yolish Kraus, the unofficial operations director for the Eda Haredi, one of the most vocal and radical factions of the Haredi community who refuse to recognize the authority of the state and are taking action against the new laws. זה שאסור ללכת לצבא גם אם הוא כן לומד או לא לומד. שואלים שבגיוס, לדוגמה, הם לא רוצים באמת, לא צריכים את החיילים. הם רוצים לגייס את החרדים כדי שלא יישאר חרדים. מי שהולך לצבא, בסוף לאט לאט הוא מדרדר, הוא נהיה חילוני. יש בינתיים 2 בנים שהם בגיל הגיוס, 2 קיבלו צו גיוס, והם לא ישנים בבית כבר, אחת לא ישן בבית כבר 1.5 שנה, ואחת 0.5 שנה לא בבית. אני נלחם, לא בשבילי, אני לא אלך, הילדים שלי לא ילכו לצבא. אנחנו לא ישראלים, אנחנו יהודים. אין לנו שום קשר למדינת ישראל. אנחנו עם ישראל. מדינת ישראל ועם ישראל זה 2 דברים. אנחנו במתקפה כל הזמן, לא רק בגלל הגיוס. בזמן האחרון זה
זה מאבק מי ישלוט. אני טוען שבסוף החילונים יפסידו במאבק. למה? זה רכבת שדוהרת לתהום. זאת אומרת, זה יורד. עכשיו, אנחנו גם ברכבת הזאת, רק אנחנו נזהרים להיות בקרון האחרון. זה מודעות של ה-15 שנים האחרונות, שכל סוגי הרבנים, ספרדים, אשכנזים, ליטאים, חסידים, כל סוגי הרבנים שאמרו שאסור ללכת לצבא. The Haredim, who practice strict observation of Judaic law, which requires a separation of sexes, keeping kosher, and shunning most modern technology, are at odds with secular society. Above all for them is preserving the study of the Torah. We spoke to Jonathan Rosenblum, an expert in Torah study, to see if he could shed some light on the conflict. We are a small community in a modern world which is not generally hospitable to religion. The yeshivas are not just another institution in the society. They are the pupil of the eye of the Haredi world and are guarded as such. For the ultra-Orthodox, the Torah is the organizing value of the entire society. Without it, they cease to exist. एक नज्म पढ़ता हूँ और एक ऐसा दर्द जिससे पिछले कुछ महीने से हम सब गुजर रहे हैं, मैं उस दर्द तक आपको पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बतौर दुआ एक नज्म पढ़ता हूँ और जब भी हम बतौर दुआ हाथ उठाते हैं तो हमें अल्लामा इकबाल साहब याद आते हैं और उनकी वो नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं वो एक मिसरा उठाता हूँ और उससे एक मुकम्मल नज्म बनाने की कोशिश करता हूँ अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों में। तो मुझे आप सबकी दुआ मिले, आप सब वहाँ पहुँचें। मोहतरम शिबली साहब, मोहतरम शहनवाज साहब, परवेज़ भाई, तमाम जो दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं नज्म पढ़ता हूँ, मेरे दर्द तक साथ दीजिएगा मेरा, मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। अता करें भाई। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन। वाह वाह, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा, काश कोई ये समझ पाए ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। काश दुनिया ये समझ पाती है
झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। वाह 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 वाह। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लपे आती है दुआ बन के क्या कहना क्या कहना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का और दुआ मांगता हूँ आपसे। आपकी दुआएं, आपकी तालियां, आपकी मोहब्बतें उन तमाम बच्चों के नाम पहुंचे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे।
बहुत शुक्रिया। दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चले।